To all. So we can start the live discussion. Allow me only 2 minutes. Very good evening, Alok Misra ji, and very good evening, Angesh Agarwal ji, and all the participants. तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव डिस्कशन। सॉरी। कैसे हैं सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। दीपा, very good evening. I want to know about the treatment of the car sale under GST. ये काफी सिंपल है। मैं अगर बात करूं, एक नोटिफिकेशन था 8/2018, 25 जन 2018 है। तो कार के ऊपर क्या मार्जिन मेथड अप्लाई होगा? व्हाट इज द मार्जिन मेथड मींस, अगर मैं बिलो डब्ल्यूडीवी सेल करता हूं तो कोई भी जीएसटी नहीं देना, लेकिन अगर अबव डब्ल्यूडीवी सेल करता हूं तो जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर देना है। नॉर्मली क्या होता है, मार्जिन स्कीम सिर्फ अप्लाइज होती है जो उस गुड्स में डील करता है, लेकिन सिर्फ मोटर व्हीकल एक एक्सेप्शन है। उसने कहा अगर कोई पर्सन कैपिटलाइज करता है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लेता है, तो उसको भी ये मार्जिन मेथड अलाउड है। सेकेंड बात, अगर मैं उस नोटिफिकेशन की बात करूं 8/2018, उसने सेकेंड बेनिफिट दिया रिडक्शन इन द टैक्स रेट। जो मान लो 28 है या 18 है, उसने दो कैटेगरी क्रिएट की, 12 या 18, एंड सिमिलरली सेस को भी नील कर दिया। सो दीज आर द बेनिफिट, एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन रेफर दैट रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस। अंगेश अग्रवाल जी, टैक्सेबल टर्नओवर 2 करोड़ है, विदाउट पेनल्टी कैन वी सबमिट? आई थिंक नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लेना। जीएसटीआर 9 की पेनल्टी लेवी नहीं हो रही उनके ऊपर। GSTR 9 की पेनल्टी, लेट फीस, नॉट द पेनल्टी, द लेट फीस वुड बी द अप्रोप्रिएट वर्ड, बिकॉज सेक्शन 47 में वो लेवी करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर वो डिस्प्ले कर देगा, जो लेट फीस का फील्ड है ना, वहां पे आ जाएगा आपका टेबल 19। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा सर। Rishabh, sir, if a property is owned by two joint owner and the rent asset for such property used as guest house is 24 lakh, is the registration required or can be shown as 12 each? तो ये इनकम जो रिसीव होती है, मैं उस प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर हूं और अमाउंट भी जॉइंट अकाउंट में रिसीव होता होगा। सी पेन बेस्ड टर्नओवर है। सी ओनरशिप दैट इज ओके भी, मैं इस घर में 2 ओनर है, लेकिन वो जिस परमानेंट अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में वो इनकम रिसीव हो रही है ना, तो उसमें टैक्सेबिलिटी काउंट होगी। क्वेश्चन इज रियली गुड ऋषभ। मैं अपना वापस पॉइंट बता देता हूँ। सपोज मेरा और मेरे ब्रदर का कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें 24 लाख आ रहे हैं, बट वो 24 लाख सिर्फ मेरे अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं, तो मेरे पैन के अगेंस्ट में इनकम मानी जाएगी। आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। दिस इज माई व्यू। In my earlier posted query for the ITC for the sale which is still not resolved. अच्छा, GST ITC for the sale of the leasehold is still not. See, प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं सर, लीज होल्ड अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आईटीसी में कोई मतलब एज सच 17(5) में फॉल नहीं करता, एंड इट इज ट्रीटेड एज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स चार्ज होता है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ अगर लीज होल्ड लैंड परचेस करते हैं जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है,
ये आपके क्लॉज सी एंड द क्लॉज डी में फॉल नहीं करेगा, एंड देयरफॉर आईटीसी वुड बी अलाउड। Very good evening, Sandeep ji. Sri Kumar ji, in the finance bill, it was proposed section 23 to make it non-mandatory for those. Sri Kumar ji, that was the difference, and that was really. अगर वो difference नहीं होता ना, if that was not the happen ना, see in the finance bill and the finance act, if you see the difference, the finance bill proposed the notwithstanding clause with subsection 1, but the act was made with subsection 2. That was the big change in the finance bill versus finance act. So now the situation is, had it be 23(1), it was a great problem. It was a great problem. So all these categories, for example, I'm a government society, otherwise I'm not required to take a registration. Had it be the notwithstanding clause with the subsection 1, then what is the problem? The problem is, I am not least bother about the TDS registration in the GST. The concept would be violated, entire things would be changed. So that is the reason they have shifted to 23(2). I hope it is clear. Per head below limit, there is no mandatory registration. Fine, no problem. Per head below limit, there is no mandatory registration. I think Rishabh ji, probably this would be the answer. 12 लाख आप ये कह रहे हैं कि जॉइंट ऑनर और इनकम टैक्स में भी मैं अभी इस क्वेरी को होल्ड करूंगा एंड विल गेट बैक टू यू, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेरी को पोस्ट कर देना आप ये वीडियो अपलोड होने पर। हाउ टू ट्रीट द सेम विल डिस्कस। ठीक है, मैं आपको अपना व्यू, आप अपना यूट्यूब जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो प्लीज पेस्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव द रिप्लाई। Sandeep Tomar ji, we have car purchased on the September 13 and it is nearly 10 year, and being a diesel one, we cannot run it here now. How to sell it out of Delhi NCR? We have to sell it. So we have to sell it out of Delhi NCR. NCR, please inform me how to sell it, and should we charge IGST for it? If so, what rate? The rate के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा नोटिफिकेशन 8/2018, either 18% or 12%. We show it as regular sale or credit the amount we are selling to the Bangalore friend. IGST होगा। अब आपकी जो WDV है, क्या उसके ऊपर अमाउंट है तो डिफरेंस के ऊपर GST चार्ज होगा। ऋषभ जी, मैंने आपको आई थिंक पॉइंट बता दिया कि आप एक बार पोस्ट कर देना, मैं ट्राई करूंगा। एंड बट हाँ, नरमई जी ने हैज गिवन दी व्यू ऑन इट। It will be normal sale. It will be the normal supply. सबिता साहू जी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे टेम्पररी सेट बना रहे हैं अपने लेबर के लिए, क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आईटीसी मिलेगा? वर्क कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन साइट पर टेम्पररी सेट बना रहा है। सी prima facie I can say that the 17(5)(c) or D, उसमें एक्सेप्शन क्या, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्शन है, इवन दो इट इज ब्लॉक इन द 17(5)(c) and D, but it is not block category for the work contract. So that could be the reason then ITC would be allowed. This is my view. The reason for deletion 13(9), sir, one main point I can say that they like to omit the concept of place of supply with the delivery location. So currently you remember that there was a provision in section 12 subsection 8 which was also talking about the delivery based place of supply if it is outside India. 13(9) is also something like that only, but now they like to say after omission it appear after omission it appear that basically they like to divide in, they like to fix the place of supply based on the LOR. So that is the reason 13(9) has been omitted, and it will be now decided based on the 13 subsection 2. That is the general principle. आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लगता है और if it is useful, please click on the like button and also click on the subscribe button to this YouTube channel. Deepa, thanks sir. One thing more. Okay, margin value will be inclusive. See, margin के ऊपर GST चार्ज करना है,
सी मार्जिन के ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, तो इट मीन इट विल बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी. सो let's say I have collected the total amount, then you will not charge the GST over and above. What is the nature of the transaction? Kindly let me know. Otherwise, it is very simple that margin would be the value on which you need to charge the GST. Let's say I sold the car in 28 lakh and my WDV is 20. So 8 lakh is the margin. 8 lakh plus GST would be charged. Now, let's say customer is not giving the GST, then 8 lakh would be treated as including GST. So that would be the point. I have the following questions. Mr. X hired a work contractor for repairing his factory building on a lump sum payment of rupees 11.8 lakhs. He debit half the expenditure to the PL and rest building account, GST rate 18%. Okay. Now, how much can Mr. X take the ITC? Answer, will it be 11.8 lakh divided by 2, 5.9, then 5.9 multiplied by 18%, 1.062. No. Lump sum payment of 11.8. So first tell me how much component, see, divide in two parts. See, lump sum amount 11.8 divided by 2, 5.9. So whether he charging GST on 11.8, whether he charging GST on 11.8, थोड़ा सा आपको थोड़ा और इनपुट देना पड़ेगा. Whether he charging GST on 11.8. Sir, I have already posted Gujarat advance ruling for ITC not available GST paid for the transfer of the leasehold land right. I have read that, but see again, we all know the limitation of the advance ruling authority. See, majority the decision are being taken in the favor of the revenue, and mostly advance ruling decisions are against the taxpayer. So considering that, still I view ITC would be available. That is my view. संदीप तोमर जी, जब परचेज करी तब 10 लाख की थी, आज सेल कर रहे हैं 3 लाख में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. तो WDV क्या है उसकी? नॉट ओरिजिनल कॉस्ट. व्हाट इज द WDV इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? PR Karthik, this was multiple choice question. Which GST exam? PR Karthik, which GST exam? Which GST exam? Oh my God. Okay, so you mean to say any exam in which you appeared and that was the question. So I think that would prima facie that would be the answer, 5.9 multiplied by 18%. So, but I need one more clarity that whether 11.8 is including GST or excluding GST. That is the only point which you clarify. I will give. If a doctor receiving some amount from medicine company and on which TDS has been deducted in income tax as professional fees, will it be taken to supply the service in GST? Will the GST? No, doctor receiving some amount from the medicine company. Okay. So professional fees का TDS deduct किया है, तो prima facie, see, if I'll say the all income of the doctor is not exempted, only healthcare services are exempted. So let's say I have receiving certain referral bonus or commission from the medicine company, it cannot be considered as a it cannot be treated as a healthcare service, correct? But at the same time, yes, you can say that if you like to make certain adjustment, you can do. Internal one. Okay. So Ashwin Thakurji, you are saying a GST payable on the amount received from the ongoing member of the housing society for the future repair. That criteria was there, na? If the amount is more than 7500 or less than 7500 per member. Deepali.
What will be the place of the supply of the director sitting fees to pay out the RCM? So because it is not covered any specific provisions, it is not covered any specific provision, then I can say the governed by the basic principle section 12 subsection 2 of IGST Act, and what is the location of recipient? So the company would be the place of supply. So company का जो भी registered locations है, that would be the place of supply. Sri Kumar, in case of the person having taxable and non-taxable or exempted item, whether RCM paid on the GT or advocate fees are to be claimed in full proportionate. It would be proportionate. Vehicle sales WDV means as per income tax, that notification in the explanation when it is clearly saying that WDV as per income tax act. Alpasa, whether RCM GST on the rent applicable to the bank branch toward the staff rent, housing rent debited in the PL account. So you mean to say that अच्छा HRA portion पर GST RCM लगेगा ही नहीं लगेगा? Is it so? You mean to say HRA portion? One good question again, Alpasa. I only can say that because it is part of salary, ठीक है. So salary itself is covered in the schedule 3, that is out of the GST. Therefore, I can say that none of the component would be chargeable in the GST, whether forward or RCM, doesn't matter. So Krishna Gupta ji, same question is being asked by you. So prima facie, in my view, that it would be applicable if any commission or something like that is being received, and it is not the healthcare services. Therefore, I can say yes, GST would be applicable. But again, the point which has been raised by the participant, by one of our participant, Rishabh, then I can say if it is professional and you like to take adjustment, in that case you may do. However, you have to think about other element as well. E-invoice टैली से पोर्टल पर 10 सेल्स इन टैली से ओके पोर्टल पर 10 सेल्स इनवॉइस आ गए, जबकि मेरे टोटल 11 थे. ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो सका, तो मुझे एक्चुअल जो सेल्स है वो लेनी है क्या? हाँ, एक्चुअल लेनी है, एक्चुअल लेनी है. अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन जीएसटी एक्ट 2A में और 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा रिसिपिएंट के, तो दैट इज द प्रॉब्लम ना. whether I left one question क्या? Alpha साहब, branch staff housing rent. Samir ji, sorry, if travel agent are taking advance against tour package, travel agent are taking advances against tour package. Okay, after the traveler leaves 2 months, then the travel agent raises the invoice. What about the GST? See, simple. If it is an advance, okay, for supply the service, you need to pay the GST on advance. However, you can treat the same as a security as well. Then it will not be the consideration. Only this 2 point you have to take care. संदीप तोमर जी, जो पोर्टल पर आ रहा है वही नहीं, टोटल 11 का आपको इनवॉइस का ट्रांजैक्शन लेना है, 11 का आपको सेल्स दिखाना है. ब्रांच स्टाफ हाउसिंग रेंट इज पेड बाय द बैंक व्हेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल अंडर आरसीएम. सी, ब्रांच स्टाफ हाउसिंग रेंट इज पेड, अगर आप ये कह रहे हैं, सो द रेंट इज सेपरेटली डेबिटेड एज बैंक ब्रांच पेज द रेंट. ओ, not part of the HRA salary, then 100% it will come, na? 100% it will come. See, if the property is a residential, whether it is being used for the residence or whether it is being used for the commerce, doesn't matter. See, the actual use is different. Immaterial, no importance for paying the tax under RCM. In case of the residential properties there, then you, being a recipient is registered, have to pay the tax under RCM. Amol sir, I think you have asked earlier also, no? Might be missed. Your question I missed probably. I feel so. Director salary required to be considered for the purpose of the cross charging as the director or also employee of the company.
The point number one, salary cannot be cross-charged. Point number one. See, the 2 point I like to tell you, salary per se cannot be the cross-charge. So the biggest problem that for internal expenditure, like salary or some support staff is there, or let's say there is a technical team who is supporting every branches. So does it mean that it is a service by one GST number to the another GST number of the same PAN? And if so, then whether we have to make the cross charge or not? So the answer is yes, that there is a service. Problem, how would we determine the how you would determine the value? Second problem. So in my view, I'm sharing my view. It can be different. That if the point number one, there is salary cannot be allocated. That is one thing. But point number two, for internally support, if the one branch is debiting certain amount in their profit and loss account. So we all know that there is a concept of the branch accounting. Let's say I have the one location in Delhi, one location in Mumbai, and Delhi is my head office. If I am allocating certain expenditure to my Mumbai branch in my books of accounts, this would be the value for the purpose of the cross charge. Otherwise, it cannot be the cross charge. I hope, Amol sir, your question is answered, right? If we are, Deepali, if we are paying the tax on the supply made to the job worker, if we are paying the tax on the supply made to job worker and we have not received the material back in 365 days, you are paying the tax, then no problem, na? Then no problem, because you are moving the goods, you are treating the supply at day one. So there is no problem. Is it compulsory to issue the delivery challenge against that, as there is no physical movement involved? No, not compulsory. No compulsory. See, suppose if you move the goods on the basis of the delivery challan and you are not paying the taxes, then what happen if it is cross 1 year or 3 year and +1 +2 or more year? What happen if the time expired and the goods not received back? Then only it will be treated as a deemed supply. But you are saying you yourself is treated as a supply at day one. So no problem, not at all required. For availing the ITC, the invoice should be signed, but most of the invoice, including these raised by you and ICAI, are not signed. Will it create any issues on the ITC? See, 36 rule 36 sub rule 2. Okay. See, I do agree that all the content has to be from initially for taking the ITC. It was the point that all the content has to be there. Whatever the content which is being given in the rule 46 has to be there. After that, what happened? There is a proviso is being inserted in the rule 36 sub rule 2. Proviso says that these 5 things has to be there. Otherwise, you will not be able to take ITC. So you can refer these 5 things like place of supply, GST number of the supplier, GST number of the recipient, likewise. So only 5 things are required now for taking the input tax credit. If rest all are missing, then it will not create any problem for ITC, but it may create the problem for the supplier. Pradeep Kumarji, sir, I have bogus dealer information. How this GST fake billing scheme, how I bust? मैं समझा नहीं. I'm also filed complaint Delhi Intelligence Office RK but no investigation is done. Fake billing amount is more than okay. So you have the bogus dealer information. How I? So you mean to say that you like to pass this information so that you have approached correct person. So Delhi Intelligence Office RK wala is only the look. If you know that particular location, you can also inform the same to the jurisdictional officer as well. But I think you have approached to the correct, but let them. I do not know what about any other, any other source are there or not. But this I know that yes, intelligence office को आपको inform करना था, which you have already informed. टैक्स इनवॉइस बन गया, उसके 2 दिन बाद गुड्स की मूवमेंट करा रहे हैं, क्या
तब टैक्स इनवॉइस वैलिड एज ही वैलिड है, बिकॉज सेक्शन 31 में वर्ड लिखा है ऑन और बिफोर. सो इफ यू आर डूइंग द इनवॉइसिंग बिफोर ऑल्सो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. In case of the deemed export, can I claim the refund of the ITC of input and input service? So you mean to say input tax credit, right? Refund of, see, Vinodji, the point is, sorry, if you do the deemed export, then you cannot do the export on LUT. The point number one, you cannot do the export on LUT because Rule 96 capital is allowing only for the zero rated supply. Second point, if you are not allowed to do the deemed export supply without payment of tax, then you have to pay the tax. Point number one. Second, then if you are paying the tax, you will take the refund of taxes paid. You will not take the refund of ITC, because ITC ka refund is allowed in two circumstances. One is zero rated supplies, export or SEZ, and second is inverted duty. And third can never be possible. Okay. But in the deemed export, refund is allowed, but refund किस चीज का? The refund of the taxes paid. Refund of the taxes paid. So in the case of the deemed export, you are not taking the refund of ITC, rather you are taking the refund of taxes paid. So I can say you can take the refund of every tax component, whether you have used ITC of input or input service, doesn't matter. This is my view. You are requested to raise the counter question. Rishabh, this is my view. Yes, Rishabh, this is my view, but we can check further also. But this is my view, prima facie. So if you like the discussion, kindly click on the like button and also click on the subscribe button. Deepali, please discuss some provision for the scrap generated. Read the section 143 and it is very simple. It is very simple. Read the section 143. If you have any question, you can ask. Can we make e-invoice after 1 or 2 days while issuing the invoice? See, normally I can say the provision is clear. The invoice should be e-invoice. It means you should do the supply only on the basis of invoice. But what happen, ईशान जी, क्या होगा अगर मान लो आपने आप बनाना भूल गए, then yes you can, but avoid that practice. पर यूज्ड ऑन, एक बार आप संदीप जी, एक बार आप नोटिफिकेशन नंबर 8 पढ़ो और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो. सी, हाँ, यहाँ पर हम ना नॉर्मली क्या करते हैं, क्वेश्चन के आंसर करते हैं, ठीक है. अगर फिर भी आपको वो कोई क्वेश्चन कोई किसी और पार्टिसिपेंट ने पूछा है, अगर वो क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि नोटिफिकेशन नंबर आप 8 पढ़िए. आई थिंक आप सेल ऑफ यूज्ड कार की बात कर रहे हैं, राइट ना? और उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछिए. आई थिंक आपका डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन 8 पढ़ने के बाद में. 8/2018, 25 जनवरी का है. Whether DC is a sufficient document for transportation of goods? Sufficient for transportation of goods for IGST supply. Tax invoice is raised after customer payment. नहीं, सॉरी, मैं कुछ और क्वेश्चन रीड कर रहा था. दैट इज द रीजन आई कुड नॉट गिव द आंसर. अल्फा सा. Whether DC is sufficient document for transportation goods for IGST supply, tax invoice is raised after customer payment and quality check.
और परफॉर्मेंस नहीं सफिशिएंट है डीसी। मेरा बिजनेस मेडिसिन फार्मा का है, 2013 में 10 लाख की कार परचेस की थी, वैट में आईटीसी नहीं लिया था, आज उसको मैं रजिस्टर्ड पर्सन को शेयर कर रहा हूँ, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप उस कार को डब्ल्यूडीवी के नीचे बेच रहे हो, आप बुक्स में प्रॉफिट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना, यू आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, राइट? तो 10 लाख को मत कीजिए, आप डब्ल्यूडीवी क्या है उसको बताइए, उसके डब्ल्यूडीवी क्या बुक्स में। यहाँ पे रूल 32(5) अप्लाई नहीं होगा संदीप जी, यहाँ पे वो नोटिफिकेशन अप्लाई होगा, क्योंकि रूल 32 सब रूल 5 तो क्या है, व्हेन यू आर डीलिंग इन बाइंग और सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बट यू आर नॉट डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो 32(5) अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा वो नोटिफिकेशन। अगर आपकी डब्ल्यूडीवी लेट से आपकी 4 लाख है बुक्स में, आप इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, अगर उस कार को आप जैसा आपने कहा कि 3 लाख में सेल कर रहे हो तो नो जीएसटी। अगर मान लो डब्ल्यूडीवी 2.5 लाख रुपए और 3 में सेल कर रहे हो तो आपको 50,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, कैन वी टेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्कुलर 172 serial number 3 and 5 for the same transaction? Example, canteen service taken from vendor and provide to employee. Can we take the ITC charge from the vendor stating proviso of 17(5) that we are obliged to provide due to the factory? See, but okay, you mean to say it is not blocked category. You mean to say it is not covered in the block category. If you are providing the canteen facility because of like factories act compulsion, then you can take the input tax credit. Okay. For the same transaction, and then when the same canteen service given to the employee in the subsidized amount is recovered from the employee. Example worth ₹100, we recover 10. Can we state that as per circular 5, it can be taken as perquisites? If the employee offer letter having stated that canteen service will be provided at a subsidized rate, and thereby being an exempt supply and GST is applicable for the subsidized recovery amount. वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन है और काफी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने ऐड किया है। देखो, पहला पार्ट तो क्लियर है कि अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई 17(5) में कवर नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट सेकंड प्रोवाइजो, आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द आईटीसी। सेकंड पार्ट आपने कहा फॉर द सेम ट्रांजेक्शन एंड द सेम कैंटीन सर्विस गिवन टू द एम्प्लॉय सब्सिडाइज्ड रेट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, कैन वी से दैट एज पर द सर्कुलर कॉलम 5 इट कैन बी टेकन एज अ परक्यूजिट? एक मिनट, क्योंकि एग्जैक्ट सभी यूजर के बेनिफिट के लिए और लैंग्वेज को माइन्यूटली रीड करने के लिए मैं एक बार सर्कुलर स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं, तो क्या रहेगा, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। इस सर्कुलर में आप कॉलम 5 की बात कर रहे हैं, whether perquisite provided by the employer to its employee in terms of the contractual agreement in between employer and employee liability GST. Schedule 3 will not be considered as a supply, hence is not applicable on the service rendered by the employee. They are in the course of furtherance of business. Any perquisite provided by the employer to its employee in terms of the contractual agreement entered into between the employer and employee in lieu of the service provided by the employee in relation to his employment, it follows therefore the perquisite provided by the employer to the employee in terms of the contractual agreement entered into between will not be subject to the GST when the same are provided in terms of the contract between the employer and employee. तो अब लेट्स से, आई होप इट इज, मैं इसको स्क्रीन पर ही रखता हूं ताकि फिर इसको बाकी सभी पार्टिसिपेंट देख सकें और फिर मैं अपने क्वेश्चन का जो भी मेरा व्यू है मैं आपको देता हूं, ठीक है? इफ द एम्प्लॉय ऑफर लेटर कहा कि सब्सिडाइज रेट पे, तो ये चार्जेबल नहीं होगा, करेक्ट? ये चार्जेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये, क्या इसका आईटीसी मिलेगा क्या?
नाउ यू मीन टू से दैट क्वेश्चन इज वेदर आईटीसी वुड बी, सो आपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, अब पॉइंट क्या है मालूम, से if something is not chargeable to GST by virtue of schedule 3, खाली एक बात और एडिशनली कहना चाहता हूं, एक बात और एडिशनली कहना चाहता हूं, सी मुझे आईटीसी 17.5 ब्लॉक नहीं करता है जैसा आपने मुझे कहा उस पार्ट पर, लेट से वो मेरा कंपल्सन नहीं है, तो क्या होगा, फूड एंड बेवरेजेस वुड बी इन द ब्लॉक कैटेगरी, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब मैं सब्सिडाइज रेट पर देता हूं, मैं सब्सिडाइज रेट पर देता हूं, अगर आपका पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर जो भी है आपका परक्यूजिट है, तो उसके ऊपर आउटवर्ड के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट लेट से कि अगर वो वहां पे भी कवर नहीं होता है, ठीक है, या पार्ट ऑफ द ऑफर लेटर नहीं है, तो जितना भी मैं रिकवरी करूंगा द रिकवरी वुड बी टैक्सेबल, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा टैक्सेबल होगा। आपका ये एडवांस रूलिंग पढ़ोगे, आई थिंक वन ऑफ द एडवांस रूलिंग वाज इन केस ऑफ द टाटा मोटर, उसमें रीजनिंग अच्छी थी, मैं एडवांस रूलिंग को बेस नहीं बना रहा हूं बट रीजनिंग अच्छी थी। यू कैन नॉट से दैट आई एम प्रोवाइडिंग द कैंटीन सर्विस टू माई एम्प्लॉय, और लेट से कोई मैं इंश्योरेंस लेता हूं और इंश्योरेंस में कुछ पार्ट में उनसे रिकवर करता हूं, आई कैन नॉट बी ट्रीटेड दैट आई एम बेसिकली प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सर्विस टू द माई एम्प्लॉय। सो बेसिकली ये रिम्बर्समेंट है, बेसिकली एक कॉस्ट रिकवरी में से कुछ पार्ट आप वापस ले रहे हो, बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इटसेल्फ। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, सो दैट यू हैव टू कंसीडर, दिस एडिशनल पॉइंट यू हैव टू कंसीडर। और कोई काउंटर क्वेश्चन बनता है क्या? बट आपने बहुत डिटेल्ड में और काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अल्पासा, बट द चेक पोस्ट ऑफिशियल डिटेन द व्हीकल, सी वो तो बहुत, सी वो कई बार है ना, विदाउट एनी रीजन भी वो लोग मांगते हैं। अगर मैं फील्ड फॉर्मेशन की बात करूं इन ट्रांजिट में, एक केस था मेरा कपल ऑफ डेज बैक, बिल टू शिप टू मॉडल था, ठीक है, उस बिल टू शिप टू मॉडल में क्या था, बिल टू शिप टू मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी कि बिल टू शिप टू मॉडल में ना बिलिंग, मतलब एक टैक्स इनवॉइस जिसके बेस पर ई वे बिल बनाया था ना वो अटैच कर दिया। अब ऑफिसर ने डिमांड की दूसरा क्यों नहीं अटैच किया, और बिकॉज अटैच नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड रेज कर दी। बट बिल टू शिप टू मॉडल के केस में अगर मैं मान लो टैक्स इनवॉइस नंबर 1 यूज कर रहा हूं फॉर जनरेटिंग द ई वे बिल, तो ये कहां लिखा है कि आपको दोनों ई वे बिल जनरेट, दोनों डॉक्यूमेंट लगाने हैं? आई डोंट फील सो। सो बेस्ड ऑन द मतलब कि रिक्वायरमेंट विच इज बीइंग रेज्ड बाय द ऑफिसर, it will not change the law. Law is very, in my view, law is clear कि डीसी के, क्योंकि परफॉर्मा इनवॉइस तो कहीं लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पीआर कार्तिक नारायण जी, ओके, एक बार फर्दर डिस्कशन कर लेंगे, वी वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम, वी वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा पॉसिबली। यहाँ पे कार्तिक नारायण जी सिर्फ एक कहूंगा, शेड्यूल 3 इज ऑल्सो कवर्ड इन द 17 सबसेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन, सो that point you should also consider for the purpose of any reversal of input tax credit. I'm not talking about 17.5 item, otherwise also, ठीक है। Is the transfer of the right to us the pathway is taxable? Is the transfer of right to us the pathway is taxable under GST? See, normally कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर कोई भी मैं राइट ट्रांसफर करता हूं मान लो, उसके लिए कंसिडरेशन लेता हूं तो ये टैक्सेबल है प्रोबेबली। यू मीन टू से एनीथिंग एल्स, तो एक बार स्पेसिफाई करें, अदरवाइज इट वुड बी टैक्सेबल। कृष्णा गुप्ता जी, एक्स लिमिटेड हैविंग 100 एम्प्लॉइज डेबिटिंग 20 एम्प्लॉय सैलरी टू द वाई लिमिटेड, देयर सिस्टर कंसर्न इज वाई लिमिटेड लायबल फॉर आरसीएम? आरसीएम तो नहीं होगा ना, आरसीएम क्यों होगा? एज्यूमिंग बोथ कंपनीज आर अंडर जीएसटी, राइट, बोथ कंपनी आर अंडर जीएसटी, इंडियन जीएसटी, कोई भी कंपनी बाहर की नहीं है। मेरे हिसाब से दीपाली, ये
टैक्सेबल तो होगा ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन तो टैक्सेबल होगा, बट हाँ आप एक बार वो देख लीजिएगा, दैट सर्कुलर एक था ना 178 सर्कुलर था, काफी डिटेल्ड था, ठीक है, वेदर दिस पर्टिकुलर विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई और नॉट, ठीक है। इनवॉइसिंग 5 करोड़ आपके इंसान जी ने सबसे ज्यादा पूछा है, इनवॉइसिंग 5 करोड़ का। सर वो इनवॉइस 5 करोड़, ई इनवॉइसिंग वाली जो 5 करोड़ की न्यूज थी ना, वो जब स्टार्ट हुई थी ना, वो फेक ही न्यूज थी। एज सच देयर इज नो मतलब कि मैसेज इन एनी ऑफ द ट्विटर हैंडल और कहीं गवर्नमेंट कम्युनिकेशन कहीं नहीं था, सिर्फ मार्केट में एक न्यूज की तरह फ्लॉट हो रही थी। तो मेरे हिसाब से कहीं न्यूज नहीं है। तो अब तो मुझे लगता नहीं है कि अप्रैल भी चला गया, ठीक है। अच्छा, 200 कैरेक्टर लिमिट इज टू लेस टू पुट द क्वेश्चन। ओ सर, अब आपके क्वेश्चन को छोड़ के किसी का भी क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। एयर फ्रेट पेड टू द डीएचएल फॉर लंदन टू दिल्ली, डीएचएल नॉट चार्जिंग जीएसटी, आरसीएम एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल है ना? यहाँ तो चार्ज करेगा ही ना। अगर कृष्णा गुप्ता जी, अगर डीएचएल आपको चार्ज कर रहा है, ज्यूमिंग डीएचएल इज ऑफ इंडियन पार्टी एंड यू आर ऑल्सो, मतलब जिसको बिल रेज कर रहा है वो भी इंडियन पार्टी है, डेफिनेटली वो टैक्स चार्ज करेगा। मूवमेंट कैसे हो रहा है? लंदन टू दिल्ली हो रहा है, राइट ना? पिकिंग लंदन से, डिलीवरी दिल्ली में है, राइट? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो 100% चार्ज होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएचएल चार्ज ना करे। अच्छा, एयर फ्रेट की बात करें, सॉरी सॉरी सॉरी, एयर फ्रेट तो एग्जेम्प्ट है ना? एयर फ्रेट एग्जेम्प्ट है सर। एक बार सीरियल नंबर 19A रीड करना, सीरियल नंबर 19A, 19B एंड सीरियल नंबर 19, तीन सीरियल नंबर रीड करना। ओनली सीरियल नंबर 19 रीड करना, सॉरी 19A और B तो खत्म हो चुका है, सिर्फ सीरियल नंबर 19 रीड करना एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का। तो वो एग्जेम्पशन की बात करता है, आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया, तो वो ट्रांजेक्शन ही एग्जेम्प्ट है, इसलिए वो टैक्स चार्ज नहीं करना। मैंने सोचा बाई वेसल आ रहा है, बाई सी आ रहा है, तो दैट वाज माय रीजन। अगर बाई एयर आ रहा है तो सीरियल नंबर 19 ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट चार्जिंग द जीएसटी। सो I want to check if for the same transaction, 1 lakh, I can claim the ITC by virtue of the serial number 3 of circular 172. Because आपकी वो एक सेकंड, and on other lag, it is not a supply. So food and beverages, which is part and parcel of employment contract, even though you are recovering, it is not a supply. And then, but can you take the ITC? Answer is yes, because it is covered in the, it is not covered in the 17.5. So prima facie, I can say, Karthik ji, answer would be correct. Not, no problem. ठीक ना? कैन वी पुट एनी वैल्यू इन द डिलीवरी चलान? लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि मैं वैल्यू मान लो 50,000 का आइटम भेज रहा हूँ, मैंने वैल्यू लिख दी 500 रुपए। सो देयर शुड बी लॉजिकल रीजनिंग ऑफ, as we know 72 months are for the bookkeeping in the GST, it means any financial year case will never be open for department after that period. नहीं ना, 72 का जो पीरियड है उसका काउंटिंग होगा, दैट वुड बी फ्रॉम द, मतलब मींस एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है। Employee recovery, employer company recover group insurance partly from employees as a deduction from the salary, GST attached on the will the, and if it is full recovery. See, मेरे हिसाब से दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, it is immaterial, but at the same time field formation are treating the same as a supply, कोई भी रिकवरी है।
तो वो सप्लाई ट्रीट करता है फील्ड फॉर्मेशन, बट मेरे हिसाब से जस्ट मैं कोई खर्चे का पार्ट में ले रहा हूँ, तो इट डजंट मीन दैट आई एम बेसिकली बिकम द इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सर्विस। तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, भले आप कितना भी रिकवर करो, डजंट मैटर, बट आई कैन ओनली से दैट यस, बट एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी ऑफ द लिटिगेशन वुड ऑलवेज बी देयर। ईशांत बंसल जी का, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइल द R1 ऑल द B2B डेटा इज ऑटो पॉपुलेटेड thereby e-invoicing, so we should put only B2C data there, or can we reset all the data and file the refresh by using this? So your choice, your choice. So I would say that the data which are auto populated B2B which is being traveled through e-invoicing remain as it is, no problem at all, ताकि आपको ध्यान रहे वो बेटर है, उसको रीसेट मत कीजिए, एंड एड B2C, दैट वुड बी द पॉसिबल वे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न निशांत बंसल जी। अभी तो है थोड़ा राइजिंग तो है ही है, नो डाउट, इन दिल्ली। कैन वी क्लेम द रिफंड ऑफ द आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड? आप रीजन क्या है दीपाली जी, आपका रीजन क्या है, व्हाई यू आर क्लेमिंग द रिफंड? Why you are claiming the refund? Is your outward supply is export or something like that? Otherwise तो रिफंड मिलता ही नहीं है ना। आईटीसी में देखो, आईटीसी में कैपिटल गुड्स का रिफंड वैसे भी नहीं मिलता, कैपिटल गुड्स के आईटीसी का रिफंड कभी भी नहीं मिलता। हाँ, सिर्फ एक वे होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विस ऑन पेमेंट ऑफ IGST, वहां पे वो आप आईटीसी किसी भी यूज कर सकते हो, दैट कैन ओनली बी द वन रीजन, अदरवाइज नो रिफंड। हाँ, तो एक्सपोर्ट एलयूटी के अगेंस्ट में है या ऑन पेमेंट ऑफ IGST है? एक्सपोर्ट एलयूटी के अगेंस्ट में या ऑन पेमेंट ऑफ IGST? दीपक जी का क्वेश्चन, सर रॉ मटेरियल 18% का है, फाइनल प्रोडक्ट 5% है, रिफंड मिल जाएगा? हाँ, नाउ देयर इज अ मशीनरी ITC which can adjusted with मंडी। There is machinery ITC which can adjust with monthly taxable item purchase and sale. There is a different business. दीपाली यस मिल जाएगा, अगर आप IGST पेमेंट की बात करें तो 100% मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो जितना भी आपने ITC यूज किया, ITC भले वो इनपुट का है, इनपुट सर्विस का, या कैपिटल गुड्स का है, और अगर आपने वो भी यूज किया है, फॉर एग्जांपल कोई कैश यूज किया, तो टोटल जितना भी टैक्स पे किया है ना आपने, दैट वुड बी अवेलेबल फॉर टू यू फॉर रिफंड। तो ये दीपक, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट। तो नाउ देयर इज मशीनरी ITC which can adjust with मंडी taxable item purchase and sales. There is a different business and done for the business done for ITC। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन दीपक। पहला पार्ट तो समझ में आ गया, 18 और 5 का अगर डिफरेंस है ना, रॉ मटेरियल 18 और आउटपुट 5 है, तो इन्वर्टेड में आपको खाली इनपुट का रिफंड मिल जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पार्ट जो आप पूछ रहे हो ना, देयर इज मशीनरी ITC which can adjust with the मंडी taxable item purchase and sales, there is a different, so ये मुझे समझ में नहीं आया। आइटम परचेज फ्रॉम मंडी इज टैक्स विच इज टैक्सेबल, ठीक है। आइटम परचेज फ्रॉम मंडी विच इज टैक्सेबल, ओके। व्हाट इफ एक्सपोर्ट इज अंडर एलयूटी, कैपिटल गुड्स ब्लॉक है, उसमें ITC का रिफंड नहीं मिलेगा 54(3) के कारण। Want to sell via ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्लीज गाइड। रजिस्ट्रेशन लीजिए और टैक्स पे कीजिए। अगर आप गुड्स की बात कर रहे हो तो एज ऑफ नाउ तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा। प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है सेक्शन 24 के लिए भी और सेक्शन 10 के लिए भी प्रपोज्ड है कि भाई आप हाँ सप्लाई कर सकते हो विदाउट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट। तो वो भी प्रपोज्ड अभी आया नहीं है, तो बट दैट बिफोर दैट यू हैव टू पे, यू हैव टू टेक एंड पे। इट इज एडजस्टेड विद मशीन ITC। तो आप ये कह रहे हो रॉ मटेरियल, सी
मतलब देखो आईटीसी का तो एक पूल है ना दीपक जी, आईटीसी तो एक पूल है, उस पूल में आप ये नहीं कह सकते मैंने ये वाली यूज करके इसको पे किया बाकी आप मुझे रिफंड दे दो, ऐसा नहीं होगा। वो जिस महीने का आप रिफंड ले लो ना, ले रहे हो ना, तो उस महीने की कैलकुलेशन का प्रोपोर्शनेट होगा। मान लो उस महीने में आपकी मशीन की आईटीसी भी है और रेगुलर आईटीसी भी है रॉ मटेरियल की, तो वो उसी प्रोपोर्शन में आपको रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रॉ मटेरियल 18 माइनस 5 13 का रिफंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जितनी आपकी इन्वर्टेड डेटेड सेल, आप अगर फॉर्मूला भी देखेंगे ना 1895 वाला, तो फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन द फॉर्मूला। तो एक बार आप देखिए, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। कुलजीत जी का क्वेश्चन है, सर व्हेन इज एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी टू बी मेड, व्हेन इज एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी में, एज आई सपोज आईजीएसटी विद पेमेंट वुड बी एंडेड। अभी नोटिफाई नहीं हुआ। सी मैं समझ गया आपकी बात, आप फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 फाइनेंस एक्ट 16 सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना, विच इज नॉट येट नोटिफाइड। तो ये कब नोटिफाई होगा, पहला बात, उसके बाद में वो नोटिफिकेशन उनको इश्यू करने पड़ेंगे, लिस्ट ऑफ द आइटम विच इज परमिजिबल, ठीक है। तो वी हैव टू वेट, अभी तो कोई न्यूज नहीं है उसके एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, कृष्णा गुप्ता जी, स्टील परचेज एट 18 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 60% सोल्ड एट 18% एंड बैलेंस 40% गुड सोल्ड एट नील रेटेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रूल 40 टू 43 के अकॉर्डिंग। सर आई एम सर्विस प्रोवाइडर, मैं सर्विस टू मेन सर्विस इज टू प्रोवाइड द हाउसकीपिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू जेम पोर्टल, कैन आई रजिस्टर्ड जीएसटी एज ए कंपोजिशन डीलर? हाँ, कर सकते हो। भाई आप तो जेम को यूज कर रहे हो खाली मतलब बिडिंग पर्पस के लिए ना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सी आर यू प्रोवाइडिंग द सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो प्रोबेबली आंसर वुड बी नो। सी एक बात ध्यान रखना, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट मेक द सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। गुड्स में रिलैक्सेशन है, जब ये फाइनेंस एक्ट नोटिफाई हो जाएगा तब उसके बाद गुड्स की मैं सप्लाई कर सकता हूँ, बट अभी सर्विस तो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में। बट मेरा मानना यह है मिथुन दास जी, अगर मैं जेम पे अगर अपनी कोटेशन प्रोक्योरमेंट पर्पस के लिए अगर मैं दे रहा हूँ, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज की दैट यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, टैक्स का रेट आपका 6% होगा। नाउ जीटी इज पेबल ऑन ऑल अमाउंट लिमिट इवन ₹1। यस, one of my client is dealing with the sale of scrap and he's purchasing from unregistered. Please clarify whether he has to pay the tax under RCM. No, not at all. See, earlier it was under 9 subsection 4, which was postponed from, or which was there till 12th of October 2017. Now, after that, there is no problem. And even if the person is dealing the sale of scrap, and then in that case, I can say Datta Korviji, so he was even not liable for 9(4) at that point of time. In 2017, there was a notification number 10. So in the current date, it is not applicable. Only one point, if he purchase from the government, only one point, if he purchase from the government. So you are saying unregistered, no problem. Let's say he's purchasing from the government, then there is RCM. Otherwise, no problem. ITC is showing GST 2A, but don't showing in the GST 2B. Tax liability and ITC comparative is technical issue or other issue? Technical. Sir, I'm paying the RCM liability, but my entire output, can I surrender the registration? Which RCM? Which RCM? प्रॉब्लम है दीपाली जी, प्रॉब्लम इसलिए है कि फाइनेंस बिल ने 23(1) में नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज ऐड किया था। फाइनेंस एक्ट ने वो 23(1) से हटा के 23(2) में कर दिया। इट मींस नाउ इफ यू आर एग्जेम्प्टेड बिकॉज ऑफ द 23(1), वो ओवरराइड नहीं करता 24 को, ध्यान रखना। किस किस चीज की आरसीएम है वो बताएं, देन आई कैन शेयर माय व्यू। In the next class, we have to wind up the session. We have to complete this today discussion. Let me quickly take certain few more questions. Maripanji, one of our client business is lodged with restaurant. Is restaurant sales, can we charge 18% tax with ITC or only 5% tax without ITC?
lodge with restaurant. Okay, in the restaurant, can we have to charge it? Tariff, देखिए, I think if it is more than 7500, then there is an option. Otherwise, you have to charge 5% without ITC. How can be government about RCMC? Isanji, general question cannot take the answer. I can only give the specific question का answer. He is buying foundry waste mud. कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड रुको. No problem. So I have given my answer. ठीक है, Praveen Solanki ji, composition registered rejected goods with which goods purchased from a registered dealer? Can I registered? See, legally correct नहीं है. Legally correct नहीं है. Oh, sorry. Your question is different. Praveen Solanki ji. Wait. Composition registered rejected the goods. हाँ, definitely it has to be from. It has to be on the basis of the credit note only. But otherwise, what happen? See, suppose I am composition dealer and you are registered party 5%, and I need to do the purchase return. If I treat the same as a fresh supply, then is a problem. What is the problem? First, I have to pay 1% or whatever the rate as may be from my own pocket. I cannot collect the tax and you cannot take the ITC. So best view would be you have to issue the credit note for purchase return or for your sales return. See, GEM procurement site, in my view, it is not e-commerce operator. In my view, it is not e-commerce portal. It is e-commerce portal, but it is not like that. You are supplying through GEM. It is not like Ola, Uber, like that. Service is rendered. Correct. So in my view, it is not a problem. Bill for freelancer service raised in Jan 2023. Receipt came in March 23. Whether March receipt become taxable or to GST? No. Way of explaining is, thank you so much, sir. Chandresh Davji, thank you so much. It's a big motivation factor for me, for your appreciation. Really great. And one thing I can say that if you are like the discussion, kindly click on the like button and also click on the subscribe button. Try to add more and more people so that we can learn very new things and I can also learn very good things. So in today, there was 3-4 questions, which was really eye-opener to me as well. And one more thing, we educating are running the different type of the courses in the finance. Myself is taking the GST course, and also we are running the GST membership. So the GST membership for the tax consultant. Let me allow me 1 minute only so that I can explain about the membership and all other things, and then we'll move to the question answer. So this is the regular GST course which I'm running. There are multiple courses which you can visit, and membership, which I like to explain that there are the 3 membership: silver, gold, platinum. And like silver, we are only handling the practical question. We are giving the reply to your question. You can ask the question, we are giving the reply to that question. And on daily basis, we are sharing one practical problem which is beneficial to all of you. And in the gold, along with that, we are also means giving the support in the reply to the notices, maximum 5 notice per annum. But you have to share the notice along with your draft reply. We'll review the draft reply, and after that what happen कि हम उसको मतलब review करने के बाद जो भी addition लगता है, we'll do the addition. And last is platinum, in which we are adding the course also. Myself is providing the 65-hour GST training on every 2 months. The new batch is started. First year you can access the recording. Second year onward, you can also join the live batch. This is the 3 membership, and I can say it is really beneficial. Free networking benefit would be also available to all of you in all the membership. Free networking ka matlab kya? Suppose you are in Maharashtra, but you need support in Delhi, or let's say in Lucknow, for example. It is not possible that you have to go to Lucknow and wapas come back, handle the GST problem, department query, etc. I will provide, or educating will provide the connected member in the Lucknow, nearby the Lucknow, and you can coordinate with them. So it would help in your practicing part also, in your handling the multiple client across pan India.
without any additional or without any so much additional charges, I can say. So if you are interested, you can join any batch or you can take the membership. It would be great to connect with you. Let's move to the question, the balance question. Any offline session? No, sir. There is no offline, only online. So I think I have not taken the question of place of supply for courier service. If it is section 12, then it will be determined by section 12 subsection 8. And if it is section 13, then it will be determined according to 13 subsection 2, general principle. Ortho doctor privately running the clinic is also selling the medicine and not the miscellaneous items. So far, he cannot take the ITC. Now he wish to take and file composition. Is that is this payable total turnover? Yes. Including exempt पर भी आपको tax देना पड़ेगा. You need to pay Satin CA because if you talk about like doctor taking the composition, it will be covered in 10 subsection 2A. And if you refer the rule 7 says that 3% GST, 3% CGST, 3% SGST, you have to pay on the total turnover. It means including exempted. So that was the problem. Very good evening, Manmohan ji. Kaise hain? Last question for the day of the Datta Corby. My client is doing the business of excavation of building and he has to carry the machine for excavation every time from another place. Please tell me whether he has to generate EV bill every time. Yes. Using the delivery challan. If there is a movement of the goods more than 50,000, whether it is for the supply, other than supply, for any reason, you have to generate the e-way bill. If it is a supply, you will probably have the tax invoice. If it is not a supply, you will use the delivery challan. But yes, e-way bill is required. Same. Hotel industry always charge C+S. In interstate, there cannot be interstate because location of supplier and location of property decide the inter or intra, correct? Because in this hotel case, always both will fall in the same state. Even though customer are within the state or customer are outside the state, it will always intra. C+S has to be charged. Manmohan Singh ji ka question le leta hu. Suspended on 2nd Feb, all return filed on 4th April and automatic active same date. What about? क्वेश्चन किसके रेफरेंस में? मतलब 2 फरवरी से लेके 4 अप्रैल. मनमोहन जी, आप तो मेंबर हैं ऑलरेडी. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ग्रुप में डालिए सो वी कैन हैव द मल्टीपल व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इज इट ओके? We'll handle the same in your platinum member group. Is it okay? Once you confirm, then I can proceed for conclusion of the today webinar. Okay, then goodbye to all of you. Thank you very much to every participant for joining this webinar, for joining this live discussion. And we are doing the live discussion on every week. So you all are requested to come and kindly share to the maximum people you can so that we have the very fruitful discussion and knowledgeable.